The meaning of life is to find your gift, and the purpose of life is to give it away. Hello, ladies and gentlemen. I, Shreya Katyal, welcome you all to today's talk. I'm at Marva Studios, and it's the convocation ceremony of Asian Academy of Film and Television 101 batch. So I'm going to talk to these people who have found their gift from this institution and now are ready to give it away to the beautiful industry, to the world. By learning for 3 months or 3 years, trust me, is not enough, because life is meant to be learned. You have to learn at every stage of your life. Every step you have to open your eyes, and you have to have a receptive power to learn anything and everything which comes to your way. The minute you think that I know everything, trust me, that's going to be the day of your downfall. सारी दुनिया में आशीर्वाद दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी जिंदगी में उजाला ही उजाला हो। हम अपने स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो। अंधेरा होगा तो तुम्हारी फीचर फिल्म अंधेरे में चलती हुई नजर आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडस्ट्री एंड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इसी बात पे ताली बजा सकते हैं। I can do it. Yes, I can do it. Yes, I can do it. Yes, I can do it. And एक बार और इसी यही आवाज ऊपर तक जानी है, याद रखिएगा। Yes, I can do it. Yes, I can do it. And I'm sure you can do it. Yes, yes. Hi, what's your name? My name is Vedika. Hi, Vedika. So, which course did you do here? I did 3 months production direction course over here. So, how was your experience? My experience was good. It was sometimes ups and downs. We learned a lot from here. It was fabulous. I would like to know that one thing that you were not carrying before coming here and now you are taking it with you. Pre-planning, because before coming here we didn't had any pre-plans, or we didn't plan the things, but after coming here we just learned that how important is that pre-planning. So, how important is that pre-planning? It's very important because your project go fail. So, guys, planning is indispensable, otherwise your project is going to definitely fail. Okay, what are your future plans now? Future plans, I would be heading over to Mumbai and having some internships and just heading over to the field. What's your name? Abhilash. Hi, Abhilash. So, which course did you do? Done my 1-year postgraduate diploma in television journalism and communication. And you are graduating today finally. How was the experience here? It was a good one. Although I joined from the 90th batch and passing out at 101, and overall it was mind-blowing experience over here. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप यहाँ लेकर नहीं आए थे और अब लेकर जा रहे हो, दैट वन फैक्टर. I know that there must be many things you have learned, but that one important significant thing. Well, यहाँ का फैकल्टीज़ की जो एक्सपीरियंस फैक्टर है जो, और जो उन एक्सपीरियंस फैक्टर के हिसाब से हमें जो उन्होंने अपना एजुकेशन इम्पार्ट किया हमें, लाइक द थिंग विच दे हैव इम्पार्टेड अस टू अस, एंड सो मोर ओवर अ स्किल सेट, enhanced skill set is the one thing which I am taking it from here. And what is that one thing which you like about AAFT? Like अगर आप बाहर के इंस्टीट्यूट्स को और बाकी इंस्टीट्यूट्स को कंपेयर करो और AFT को कंपेयर करो, आप यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हो, तो वो एक क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब बहुत ही अच्छी लगी और बहुत डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट लगी? Well, the most important thing which I feel is like the comfort zone of a student and faculty over here. And it's not like that कि तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के हो या फिर लाइक यहाँ पे मेरे कोर्स में मेरे बैच में काफ़ी सारे लोग थे जो इंजीनियर थे, जो बीटेक पास आउट करके आए थे, आईटी में आए थे, लाइक तो उनका एक वो फैक्टर देखे बिना सबको एक ही जैसे लाइक लुक दम इक्वालिटी के साथ देखा. And that is very important for any artist. Comfort is indispensable for any artist and for creativity to flourish. Okay, what are your future plans now? I would like to work in the film industry as a director.
Oh, that's amazing. So he's a budding director. Wish you very good luck for your future and thanks for talking to MSTV. So what amazing experiences, I must say. And now it's time to talk to a few more brilliant students over here. Hi guys, what's your name? My name is Amit Tikku. My name is Chanchal Gill. So which course did you do from here? I was doing here TV journalism and mass communication. And you? I've done acting course. Okay, so I would like to know first of all your experience. Got to know about several aspects of life from here. और सबसे अच्छी बात है सारे टीचर्स बहुत कूल हैं, मतलब बहुत प्लेफुल एटमॉस्फेयर होता है कि ऐसा नहीं है आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल देगा या कुछ करेगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ भी होती है कि जो आपको मतलब एक ही फील्ड में आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी फ्रॉम हियर। That's amazing and happiness is the key to success. So I'm sure that you're going to rock. Okay, तो अब हम जानते हैं हमारी प्रीटी एक्ट्रेस से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और यहाँ के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इतने मतलब कंफर्ट जो जोन होता है यहाँ का वो नेक्स्ट लेवल है। एंड सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बीइंग कंफर्टेबल इन अ जोन। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ सीखना शुरू करते हैं और वो बहुत अच्छा रहा। I always say that comfort breeds creativity. So that is what I'm hearing from every student and that's amazing. Okay, कोई ऐसी मेमोरी शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ जो आपको हमेशा याद रहे, इटर्नल हो गए हो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, ड्यूरिंग योर क्लासेस, ड्यूरिंग योर बंक्स? आई थिंक बंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं, तो मन करता था कि रोज़ कुछ नया सीखने को मिला है, तो बंक करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। एंड स्पेशली आई वांट टू थैंक पूनम मैम क्योंकि वो बिल्कुल फैमिली की तरह उन्होंने हम सबका मतलब पूरे बैच को संभाला है एंड दैट वाज ग्रेट। ये सो बहुत सारी मेमोरीज हैं इनके पास, आई एम श्योर, और वो ही फ्यूल देने वाली हैं आगे काम करने में। आप मुझे बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान्स लाइक मैं बताऊंगा, जैसे कि मेरे को पता नहीं था, आई केम हियर फॉर टीवी जर्नलिज्म कोर्स एंड लेटर इन दिस इंस्टीट्यूट आई केम टू नो अबाउट दैट आई एम गुड इन एक्टिंग स्किल्स ऑल्सो। तो अब मतलब मेरे पास एक ही चीज़ नहीं है कि मतलब मैं जर्नलिज्म में जाऊँगा। आई लर्न डायरेक्शन ऑल्सो, आई लर्न सिनेमाटोग्राफी ऑल्सो। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें कि मतलब मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। रिसेंटली आई एम वर्किंग इन 2GetU ऑल्सो एज एन एक्टर। सो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं बंद हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो आई एम वेरी मच हैप्पी। That's amazing. If I ask you that one word to quote AFT or your institute, what would it be? होम, सेकेंड होम। इट्स लाइक एन टेम्पल फॉर मी। Home and temple, which are closest to every person's heart. That's brilliant and we wish you very good luck for your future. My name is Himanshu. Hi Himanshu, तो पहले ये बताइए कि कौन सा कोर्स किया आपने यहाँ से? Well, I did 1 year acting diploma from here. Okay, so we have an actor here, the upcoming actor. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? Well, when I came here, it was quite nice, and I had a lot of issues in my mind, especially when I came here. So I'm very thankful to all the faculty, Satish sir, Poonam ma'am, Durga ma'am. I think they helped me a lot. They completely changed my mindset because I was quite introvert at that time, and you know, all of my peers, all of my family members, they have noticed a drastic change in me, especially in the last 1 year or so. So it has been very enriching, to be very honest. So basically in the field of acting, that is one factor which we need to develop on. Introverts cannot work in this field and I'm very happy that you have gained on confidence and taking it back home from here. Okay, आगे की क्या plans हैं आपके? Well, I just want to go step by step. I don't want to think too far. The only thing that I'm focusing right now is to get meaningful work. That is my aim right now. I'm not like focusing on 5 years, 10 years. I just want to go step by step. That is my aim currently. So I'll be here for a while. I'll be here for 2-3 months, and then I'm planning to shift to Mumbai. That's brilliant. I want to know one thing from your side, that since you have done the acting course, आपके हिसाब से एक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो फैक्टर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें बात में आ जाती हैं कि you know, you should be a good actor, you should have a good diction. Those things are secondary, I think. But first and foremost, according to me, what I've experienced is that, you know, an actor should always be confident. He should be confident, and that should reflect in his body language. That is it. So that is what he's carrying back home and we are very very happy for him. Any actor do you follow in particular? कोई idol है आपका, किसी को idolize करते हो, किसी से सीखते हो on screen जो?
वेल इंस्पिरेशन लेता हूँ, बट एक मेरा ये मानना है कि एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए. आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं एक, लेकिन किसी का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही है. जो भी जिसको भी आप तो कॉपी करना, आई डोंट थिंक दैट्स गुड. बट या as an inspiration, if you say, I think there are very good actors in our industry. Manoj Vajpayee is there, Nawazuddin Siddiqui is there, then I mean Govinda is there. They came in the industry without any godfather, so I think they are an inspiration not only for me, I think for every budding artist, not only an actor, every budding artist, because to go in the industry and rock without a godfather is, I think it's absolutely a big thing. Very true. These kind of examples show us that talent speaks definitely, and very well said that you should celebrate your individuality and do not try to copy others. Everybody is special. Exactly. I mean, you can have inspirations. Everybody. I mean, every artist has an inspiration or the other. But to copy someone, I think that would be doing injustice to your own talent. Very true. You have to maintain your originality, and that's what I feel. मैं तो ये कहती हूँ कि एक आर्टिस्ट ना खुद को भी दोबारा कॉपी नहीं कर पाता है, तो किसी और को कॉपी करना तो इम्पॉसिबल है. सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, योर गोल्स एंड बी ओरिजिनल. थैंक्स फॉर टॉकिंग टू MSTV एंड वी विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर. व्हाट्स योर नेम? वरुण वत्स. हाय वरुण, तो आपने कौन सा कोर्स किया है यहाँ से? 3 months कैमरा एंड लाइटनिंग. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था AFT पे? किस तरह के इक्विपमेंट्स बॉलीवुड में प्रोफेशनली यूज़ होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, मेकअप कैसे होता है, मेकअप का लाइटिंग कैमरा में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सब सीखा. कई सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. That's what I always say that talent और creativity कहीं ना कहीं हम सब में होती है, but the institute definitely polishes it up. आपको टर्म्स पता चलते हैं, आपको तरीका पता चलता है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे करना, और वो ही हमें रिस्पेक्ट फेच करता है. ओके, सो आई वुड लाइक टू नो सम मेमोरी ऑफ योर्स. कोई ऐसी याद जो हमेशा के लिए लेकर जा रहे हो अपने साथ, जो आपको फ्यूल देने वाली आगे काम करने के लिए? ऐसी तो कई सारी हैं, लेकिन मेनली जो है वो मीटिंग हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे इतने जो टीचर्स मिले हैं और भी फ्रेंड्स भी बने हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स भी बने हैं, तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी प्रॉफिटेबल एज वेल. आगे की क्या प्लान्स हैं आपके? अब क्या करने वाले हो? लाइक इंस्टीट्यूट एजुकेशन तो हो गई है, सो अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव दैट थिंग. गोल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका वो गोल क्या है? बेसिकली अभी तो पहला स्टेप चढ़ा है, सीखा है. मैं चाहता हूँ कि जो मतलब इंडिया में या हो सके तो वर्ल्ड में जो एक हाईएस्ट पॉसिबल स्टेप है, स्टेज है एक सिनेमेटोग्राफर के लिए, DOP के लिए, वो मुझे मिले, नाम मिले. लेकिन उससे ज़्यादा मतलब तारीफ इस चीज़ की मिले कि काम बंदे ने अच्छा किया. मतलब इसकी की कोई भूख नहीं है, लेकिन मिलती है तो अच्छा लगता है. Definitely, because if you work for a cause, you definitely and automatically get lots of applause. And inshallah, आपके सारे सपने पूरे हों, हमारी यही आशा है. All the very best for your future. ICMEI, International Chamber of Media and Entertainment Industry, has been spreading love, peace and unity through art and culture. And under our Indo-Uzbekistan Film and Cultural Forum, we gave a scholarship to a student from Uzbekistan. So let's learn about his experience over AAFT. Hello sir, what's your name? Hussain Rashidov. Hi, so I would like to know first of all that which course did you do under your scholarship program? My course is production direction and TV journalism, 3 months. Oh, that's brilliant. So how was your experience over here? क्या सीखा आपने? What did you learn? It is very professional school from cinema, from TV journalism or TV. It is a very good system, education system, because it is with the practical, not only theory. It is with practical, so it's so important. That's very important. I always say that the best kind of knowledge is beyond those four walls, and theory backed with practical is the best kind of a combination. Okay, so what are your future plans now? You're going back to Uzbekistan, and how you're going to help your film industry after learning the education from here? First, I want to say thank you for chance to my country, to my national agency Uzbek, and thank you for Mr. Sandeep Marwa for giving me big chance. It's a really big chance. And my plans for future,
creating joint project with Uzbekistan and India. It may be historical movie about our person is our grandfather, your grandfather also is Zahiruddin Muhammad Babur, you know. Yeah. That is the It is- title. Yes. So first future plans, this. That is brilliant that you have so many things already in mind, and we are definitely looking forward to work on these plans. Okay, then I would like to know from your side, finally, that what is that memory which you are carrying back to your country from India? First time when I came India, Indian foods it's very spicy and for me it's not tasty. But but next days it is, I don't know, I adapted, no, I don't know. And nowadays it's very tasty and very sweet. So now I'm sure that you're definitely going to miss Indian food. Yes, of course. And I want to tell to my sir, Professor Yagesh Mishra sir, thank you very much for professional education. He's a best teacher. I taught him about it. That's amazing that he could gather so much of positive things from India, from AFT, and it was a lovely experience for him. Thank you. It was a pleasure hosting you here. Thank you for you. All the best for your future. So it's beautiful to see that these people are charged with so much of enthusiasm. Their time as a caterpillar has expired, and these budding filmmakers, these budding artists, I must say, are ready to fly with their wings. We all wish them a very good luck, and I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV, Har Pal Aapke Saath, and don't forget to stay connected.